Hello guys. We are here to learn about the database and SQL. So we can start with the data because data is a basic and important term in DBMS and SQL. In DBMS, data is a collection of fact, figures, ऑब्जर्वेशन और मेजरमेंट. जो डेटा है वो एक प्रकार की इन्फॉर्मेशन है बिकॉज जब हमारे पास इन्फॉर्मेशन होगी तभी हम उसको डेटाबेस मानेंगे और डेटाबेस मानेंगे तभी हम जो DBMS है लाइक उसका डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जब हमारे पास डेटा होगा तभी हम उसको मैनेज करेंगे. सो वी आर क्लियर टू डेटा. सेकेंड, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम is a software, we can say is a software which helps to define allow user to define, create, maintain and in the database and provide full access to the data. Now we are learn advantages of DBMS. First is security. So before we use of DBMS, we use file system. In file system, we have not like security. We have not guarantee कि हाँ ये data secure रहेगा या नहीं. But in DBMS, I will complete sure that data is secure. मैं कह सकती हूँ कि हाँ इस DBMS में data secure हो सकता है क्योंकि DBMS में जो डेटा रहता है वो सिक्योर रहता है. उसमें जो यूज़र है वो ही उसको चेक कर सकता है और इसमें प्राइवेसी भी रहती है. जो यूज़र है वो ही इसको खोल के दे सकता है, तो ये सिक्योर रहता है क्योंकि इसमें फाइल सिस्टम जैसा नहीं है कि वी हैव टू पेपर वर्क. तो और फाइल सिस्टम में सिक्योर इसलिए नहीं रहता था क्योंकि सम इंसिडेंट्स रेन हो गई तो शायद ख़राब हो गया डेटा बैकअप नहीं है एंड देन गुम भी हो सकता है. बट इन DBMS वी कैन नॉट से दैट डेटा इज़ नॉट सिक्योर, डेटा इज़ सिक्योर. एंड सेकेंड, रिड्यूस रिडंडेंसी, रिपीटेशन को कम करता है. थर्ड है बैकअप एंड रिकवरी. फाइल सिस्टम में हमारे पास कोई बैकअप नहीं होता. एक फ़ाइल है, वही फाइल बस एक वो फाइल में ही डेटा है और वही डेटा बस हमारे पास. बट नो, इन DBMS वी हैव अ बैकअप और अगर वो डेटा कभी लॉस्ट हो जाता है, कभी डिलीट हो जाता है, तो हमारे पास एक ऑप्शन रहता है बैकअप और रिकवरी का. फोर्थ पॉइंट है डेटा शेयरिंग. डेटा शेयरिंग ये होता है डेटा शेयरिंग कि हम किसी और यूज़र को डेटा शेयर कर सकते हैं जब हम चाहें. लाइक आई एम क्रिएटिंग अ डेटा एंड इफ़ आई वांट टू शेयर विथ माय कलीग्स और विथ माय other person, so we can share data. And fifth is easy maintenance. When in file system we have to maintain the record and it is hard, but in DBMS we can maintain easily our data and reduce time. In file system we have to write and it is so hard to write all the record and it takes a lot of time. But in DBMS it reduces time and it saves our time also. So it takes a little time but it not take a lot of time like a file system does. And last, multiple user interface. In a file system the one user can write the record in one time, but in DBMS multiple users write multiple users input their data in DBMS. So it is a big advantages of DBMS that in world many of the users are working in one time at a one platform. So this is the advantages of DBMS. एप्लीकेशन ऑफ DBMS, ये जो DBMS है वो कहाँ कहाँ यूज़ होता है, ये मेन चीज़ है. बिकॉज समटाइम्स वी नो द DBMS, वी नो द क्यूरीज, बट कहाँ ये यूज़ होना है बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता है. सो फर्स्ट है बैंकिंग एंड इंश्योरेंस. आप बैंक में जाते हो, वहाँ भी यूज़ होता है. ई-कॉमर्स, आजकल बहुत से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं तो उसमें यूज़ होता है. लाइक बहुत सारे लोग ऑनलाइन सोशली बिजनेस कर रहे हैं तो उनके लिए बहुत यूज़फुल है DBMS. एंड सोशल मीडिया, ऑब्वियसली इंस्टा, फेसबुक, मैनी सोशल प्लेटफॉर्म दे आर यूजिंग DBMS. नेक्स्ट है हेल्थ केयर. हेल्थ केयर लाइक हॉस्पिटल्स, medical stores, they are also using DBMS.
Railway reservation system. Yes, this is we have to, like, uh, I'm saying that railway reservation. So yeah, we when we book a ticket, when we used to travel, so DBMS also used there. Library management system. We in college and in schools, we are going to libraries. So in libraries, the record was maintained. So instead of file system, they are using DBMS. And next is, we are moving on, SQL. So SQL is a structured query language. In SQL, like in DBMS, we see the data is stored, managed. So how we can store? So SQL is the language which can be used in DBMS, and this will work. So structured query language is the standard language used to communicate with databases. एंड जो ये एक ऐसी लैंग्वेज है जो यूज़ करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं डेटाबेसेस से. So now we are moving forward in SQL commands. There are three types of SQL command: DQL, DDL, DML. Uh, Mainly we will learn the important command. So first command is create. Create command is commanded DDL, data definition language. So create command is used to when we have to give the structure, so we will use the create command. Mainly it gives the structure. And then insert command. Insert command comes in the data manipulation language. So when we have to give the value in the structure, then we use insert command. And then the select command. Select command is used to give the output result. So this command comes under data query language. And then delete command. Delete command is used to when we do not want the value, when we give the wrong input. So if we have to delete something, we can use the delete command. And then last, update command. Update command comes under data manipulation language. So update command, like when we have to add something, you delete, so we use update command. So now we are moving forward in history of SQL. So we know about the SQL and SQL commands. So now we have to know about the history, how SQL came and how the name was SQL. So in year 1974, SQL created by IBM, International Business Machines. So now it was SQL, but in 1974 the people pronounced SQL to SQL. Now also some persons and some of them are saying pronounce the SQL, but we are pronouncing the SQL. So in 1974, structure English query language. Instead of SQL, it was structure English query language. In year 1979, SQL renamed as SQL, like from structure English query language to structure query language. In year 1986, NC, American National Standards, approved SQL. And in year 1987, ISO, International Organization for Standardization, adopted SQL. So this is the history of SQL. Now we are conclude the DBMS and SQL. So DBMS help us store and manage data efficiently, while SQL is the language used to access and manipulate data. Together, they form the foundation of modern database system and are widely used in almost every industry. So now DBMS is used in mostly in everywhere, every organization, every administration, in colleges and in schools, everywhere DBMS and SQL are used. Thank you.